A very warm good morning to all of you. Now in sixth chapter, today I am going to start to explain the this topic, second topic, literature. Here we were reading about this administration system during Rajput age. There was two type of administrative system. One to village side panchayati raj system was there, and in the main court where the used in different ways. It is not necessary कि next the king eldest son will be the next king. Who is capable? They were choosing at that time by the minister or somebody, and that person will be the next king. Now here I am going to read about Rajput 8 literature. Literature means about the poem, about the books, writers written, so many stories about that we are going to read here. During the Rajput age, there was a lot of religious writing as well as literature of various kinds. Religious writing means धार्मिक किताबें बहुत लिखी जाती थी उस टाइम में, तरह तरह के. Scholars mean the people who are very educated, high knowledge. Scholars and education receive great patronage from kings. मीन्स उस टाइम में जो लोग होते थे, जो स्कॉलर्स होते थे या जो राइटर रहते थे, जो पढ़ाई लिखाई करते थे, उनको रेस्पेक्ट करते थे. मेनी लिटरेरी वर्क्स वेयर कंपोज्ड इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नाडा, तेलुगु एक्सेट्रा. मेनी लिटरेरी वर्क मीन्स बहुत सारे डिफरेंट भाषाओं में बुक्स लिखा गया था. द ग्रेट संस्कृत पोएट मग, अंडरलाइन, द ग्रेट संस्कृत पोएट मग कंपोज द एपिक शिशुपाल वध. उस टाइम में एक मग करके एक पोएट था जिसने उसने एक बुक लिखा था शिशुपाल वध, जो बहुत ही फेमस था. दिस एपिक डिस्क्राइब्स द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्णा. Epic means not a small book, like a big story book, thick story book. उसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध का वर्णन किया गया है. Similarly, another poet, श्रीहर्ष, wrote the epic निषाद चरिता, which is about the story of Nal and Damayanti. ये भी दूसरा स्टोरी है जो हमारे पुराना स्टोरी है, जो बहुत ही फेमस है हमारे हिंदू रिलीजियस में. नाल और दमयंती के निषाद चरिता, वो भी उसी श्रीहर्ष करके एक राइटर ने लिखा था. Even songs by Radha and other gopis sung in praise of Lord Krishna were presented in a lyrical manner. कह रहे हैं जो गोपी लोग कृष्ण को खुश करने के लिए गाना गाते थे, वो गाने भी लिरिक्स मीन्स गाने, वो चीज़ें भी गाने के रूप में, वर्ड्स के रूप में लिखा गया है. द बायोग्राफी and achievements of the kings were also composed in a poetic manner. उस टाइम में जो भी राजा हुआ करते थे, उनके जीवन के बारे में और उन्होंने क्या क्या अचीव किया था अपने जीवन में, वॉर में, या उन्होंने कुछ पैलेसेस बनाया या जो भी अच्छा काम किया, उसके बारे में पोएट्स लोग अच्छे तरह पोइटिक मैनर में दे वर कंपोज सो मैनी पोएम्स. बायोग्राफी मीन्स किसी और के जीवन के ऊपर उनका बुक लिखना. हेमचंद्र आचार्य रोट कुमारपाल चरिता. At that time, Hemchandra Acharya name one writer was there. He had written Kumarpal Charita name book based on the life of the Solanki king of Gujarat, Kumarpal, and a grammar book Siddham Sabd Anushashan. और उसने एक grammar book लिखा था, that name was Siddham Shabd Anushashan. As the title indicate, the names of King Siddharaj Jai Singh and Hemchandra Acharya are associated with this book. तो उस बुक में
तब के टाइम में सिद्धराज जयसिंह करके राजा था, उसके बारे में ये पूरी बुक लिखी गई थी. दिस बुक वॉज कंसिडर्ड सो इम्पॉर्टेंट दैट इट वॉज प्लेस्ड ऑन एन एलिफेंट ड्यूरिंग ए प्रोसेशन इन पाटन. एंड व्हेन दिस बुक वॉज completed, it was the book and the king the book and the writer was patronized by the king to give the respect to the holy book, not holy book, to give the respect to that book. They just kept that book on the back of the elephant and take out the procession all over Patan. So all the in this way, with that, kings also walking with this elephant to all over his kingdom. So in this way, that times all the Rajput kings were very good. They just appreciated the writers, poets, and whatever they have written the books like that. So in this stanza, how many writers are there? You just write with their names with their books. One side you write writer and all the writers name you note down in your notebook, or another side books and books name you write. Then some more are there in next page. Not only poetry but plays were also written during that time. यानी पोइट्री नहीं, तब के टाइम में छोटे छोटे प्लेज मीन्स नाटक भी लिखे गए थे. भवभूति रोट उत्तरम चरित्रा while Pandit Narayan composed Hitopdesh, a collection of stories based on the Panchatantra. Here telling Bhavabhuti name one writer was there, he had written Uttam Charita name book. Then one Pandit Narayan name poet was there, he had written हितोपदेश करके एक बुक लिखा था जो पंचतंत्र के ऊपर बेस्ड था. पंचतंत्र हमारा बहुत ही ओल्डेस्ट और बहुत ही नामी बुक है, जिसमें नेचर से रिलेटेड और मॉरल से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरियाँ उसमें मिल जाती है. Either your school or a nearby library must be having books containing collection of stories or folk tales. Let us now do a reading activity. Now children, here see the poet or author names are written, another side their work written. In this way you note down all the writers and their creations name या books name. See, Vishakha Dutt. Vishakha Dutt is a poet या author name. He had written Mudra Rakshasha. Then next one Kalhar. Raj Tarangari written. Bilhan name writer written Vikramadev Chant. Then Somdev written Katha Sarit Sagar. Chand Bardai written Prithviraj Raso. Merutunga name writer written Prabodh Chintamani. So these are the books and writer names. You go through, learn it for your MCQ, fill-ups. So many ways it can come. So next topic is architecture. 1 minute, just see how many. It is a 6th chapter. Okay, architecture also today we will go, then we'll finish. Architecture means buildings making. Yeah, that time they were creating palaces, not a building, palaces they were making, and temples making and ponds making. So, and not only they were constructed those things, they were constructed those things very minutely, very artistic manner, that is called. Among the various construction during the Rajput age, temple construction is noteworthy. Means at that time, Rajput time, you have seen in Rajasthan side so many palaces. It was very artistic way. They means the Rajput were fond of art or architecture like that. At that time, they had made so many temples. The Rajput kings were fond of constructing grand and artistic buildings also. The architecture and sculpture of that time is evident from the temple, forests, palaces, lakes, etc.
Among the temples, Khajuraho in Madhya Pradesh and Puri temple of Lord Jagannath are famous for their architecture and sculpture. मीन्स स्कल्पचर मीन्स वहाँ में जो मूर्तियाँ रहती थी वो, आर्किटेक्चर मीन्स बिल्डिंग। तब के टाइम में खजुराहो, मध्य प्रदेश के खजुराहो टेम्पल और पुरी जो उड़ीसा में है वहाँ लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल बहुत ही फेमस था। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। कह रहे हैं जैसे हमारे इधर पाटन में सन टेम्पल है, पाटन में वैसे ही सेम ही ओनली उड़ीसा में भी ये कोणार्क टेम्पल है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क में सन टेम्पल है। व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ बोथ द साइड? एक आप समझ लो, एक हमारे गुजरात में है तो दूसरा उड़ीसा में है, बट दोनों ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पे ही सिचुएटेड है, इधर वाला भी उधर वाला भी। और दोनों में ही सब टाइम्स कहीं शरद और उस टाइम पे सन रेज आर फॉलिंग फर्स्ट ऑन द डिटी। दैट्स वाई द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल एंड इट इज़ नोन एज सन टेम्पल। जब हर महीने में नहीं, कुछ महीने क्या होता है, उगते सूरज की फर्स्ट किरणें इन्हीं जो टेम्पल के मंदिर में फर्स्ट पड़ती है मूर्ति के ऊपर, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी फेमस। इट इज़ कॉल्ड सन टेम्पल ऑफ कोणार्क और सन टेम्पल ऑफ पाटन। द कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट फाइननेस एंड वॉज शेप्ड लाइक ए चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। कोणार्क के सन टेम्पल को दूर से देखने से लगता है कि ये एक रथ, चैरियट मीन्स रथ की तरह है जिसमें 7 घोड़े उस रथ को खींच रहे हैं, ऐसा लगता है। Among the other sun temple of India, the Martang temple of Kashmir and the Modhera sun temple of Gujarat are famous. A prominent feature of the, prominent means khas, a prominent feature of the Modhera temple is that the first rays of the sun fall directly on the idol. The Ellora caves of the Deccan have caves representing 3 religions: Hinduism, Buddhism and Jainism. Ellora caves you will get in Maharashtra side. Here telling कि here also some caves are there. Caves के अंदर में, caves means गुफा के अंदर जाने से ये बहुत डेकोरेटिव मूर्तियाँ सब दिखती है, खुदी हुई है, दैट इज़, or that one is showing all the 3 religion: Hinduism, Buddhism and Jainism. One among these is the Grand Kailash temple. The Elephanta caves near Mumbai have a beautiful 3-faced sculpture of Lord Shiva. क्या ना, एलिफेंटा केव है मुंबई में, वो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, उनके तीनों साइड में फेस जैसा एक स्कल्पचर बना है, मूर्ति बनी है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई is famous all over India. The temple of South India are especially well known for their imposing gateways called gopurams. यानी साउथ साइड में तब के टाइम में whatever the temples were there, all the temples having one gate specially, and that gate is known as gopuram. After hearing about the fame of such grand temples, many foreign invaders came to loot them. कह रहे इसीलिए इंडिया इतना फेमस था किसी टाइम में, इतना गोल्ड से सो मैनी टेम्पल्स वर मेड वेरी ब्यूटिफुली कर्व्ड दैट द फेम व्हेन रीच टू अनदर कंट्री, दैट्स व्हाई सो मैनी अनदर कंट्री पीपल दे जस्ट attack so many time on our country and try to loot it. Invaders mean जो आक्रमणकारी. The magnificent Somnath temple of Gujarat was attacked many times. कह रहे गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल है उसमें so many times अटैक हुआ था, इसीलिए 17 times. You will read the story in this book only about it कि मोहम्मद गजनी नाम one king was there, he 17 times he attack on Somnath, but last when he attack in 17 time he would be successful and looted and destroy the temple too much.
So children, here I am ending in this 2 pages. A lot of stories are there. You just point wise all the book's name, writer name, temple's name, where it is situated. Like that, you just prepare yourself. You're not a grown up, not depend on teacher. First, you read the chapter. This how much I have explained. Which one is naming word? You underline first with a pencil, then note down in your notebook clearly. Exam, very soon exam is going to conduct. So I will give the fill-ups or everything from inside the book. तो ये भी ज़रूरी नहीं कि मैंने वर्कशीट में कितना दिया है, वो भी डिपेंड नहीं है. बुक पढ़ो, बुक से ही मैं दूंगी. वर्कशीट में मैंने क्या दिया है मेरे को खुद पता नहीं है. अंडरस्टूड. तो गो थ्रू द बुक रीडिंग करना शुरू कर दो. ओके, बाय.